Okay. Remember last time we did standard deviation and we also did t-test, right? Acha. And the reason why we did standard deviation and t-test, आवाज तो मेरी आ रही है ना मरियम? जी मिस. हाँ. The reason we did standard deviation and t-test was actually, अगर हम पीछे से देखें, तो we were doing the topic of correlation, and when we were finding out Pearson's linear correlation test, and we had to figure out this value. Let me just rub and show you this value, which was Sx and Sy, which was supposedly to find out the standard deviation. So I had to tell you okay, what is standard deviation and how are you going to calculate it. जिसकी वजह से last week का सारा जो lesson था वो इसी पे based था कि we were trying to figure out किसका क्या formula है. And I also gave you a reminder that in exams you will not be given such lengthy questions. Either the examiner will already make the table ready made for you and you just have to put in the missing values, या उसने पहले से ही आपको standard deviation calculate करके दी हुई होगी, right? And then again I told you कि you even if you have to go through all that tedious procedure of calculating it step by step, formula आपके पास होगा, and if you want to check your answer you can always check it through a calculator. Having said that, we move on to, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है? We move on to another kind of a correlation which is known as Spearman's rank correlation. ठीक है? Spearman's rank correlation. इसको समझने से पहले थोड़ा सा I will just recap के what were the criteria of using the Pearson's correlation coefficient. थोड़ा बहुत कुछ याद है मरियम? Why was there a need to calculate the Pearson's linear correlation coefficient? कुछ याद है? मिस टू सी के दो चीजें कितनी रिलेटेड हैं एक दूसरे से. Say, if you want to find out the relationship between two variables, we can apply this coefficient, because just by looking at a normal distribution data, we cannot assess objectively the strength or the magnitude of the relationship between two variables. Okay? So for that reason, if we have two sets, minimum of two sets of interval data, और हर सेट में 5 pairs of data हो at least, or 10 or more data, and also if the scatter graph has been given to us और उसमें हमें suggestion मिल रही है by just by looking at the scatter graph that there might be, the key word is that there might be a linear correlation or a linear relationship between these two variables, we can then use this formula. यही हमने last time किया था कि I had given you some data. This was the data, अगर आपको याद हो. And then since we were short of time, so what I did was कि मैंने आपको ये graph दिखाया था, अगर आपको याद हो, है ना? आप बताओ मरियम, आप क्या कह सकती हो कि by looking at this graph, what can you comment about numbers of individuals of species Q and numbers of individuals of species P? Does this scatter graph give you a rough indication that there might be a linear correlation between these two variables? Yes, because the points are very close to each other. The points are very close to each other, but of course we are not 100% sure. So for that reason, we use this formula to calculate the correlation. Achha, now let's move on to another formula for calculating correlation, which is the Spearman's rank correlation. अब देखते हैं हम ये क्यों use करते हैं formula, right? The Spearman's rank correlation is also a mathematical formula which is used to find out if there is a correlation between two sets of variables when they are not normally distributed. ठीक है? Data को देख के, I will show you the data and you will very well realize this कि by looking at the data, सिर्फ देखने से कि they don't look as if they are normally distributed. अच्छा, अब मुझे बताओ मरियम, normal distribution का क्या मतलब है? मैंने ये बात पहले भी बहुत दफा बताई है. What do you mean by normal distribution? मुझे बेल शेप्ड ग्राफ था उस टाइप का. बिल्कुल, बेल शेप ग्राफ is normal distribution in which, let's say I'm just making this graph on top of this page. Okay, if I am making
a graph, it will somewhat appear like this, which means that I will have some number of individuals who are lying on this extreme, some which are lying on this extreme, and some which are lying in the average part. So this should how a normal distribution graph should look like. ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें if you look at the data, it will give you an idea कि ये data normal distribution वाला data नहीं है, and when you plot a scatter graph, you might be very judgmental about के लग नहीं रहा कि इसमें there is a linear correlation between these two variables. So in that case now, instead of using the Pearson's linear correlation coefficient, you will be applying this formula. ठीक है? तो क्या क्या condition है इस formula apply करने की? Condition number 1, that the data is not normally distributed. ठीक है? This is condition number 1. Condition number 2, if you plot a scatter graph, you will not get a straight line. This is condition number 2, right? And there are some other conditions also. अभी फिलहाल तो इसमें दो ही बताई हुई हैं. ठीक है? Okay. Now look at this data. Does it look to you just by looking at it, okay, this data is normally distributed or not? Yes, Mariam. It's sort of hard to say, but लग तो रहा है because extreme values भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बीच में भी हैं. हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं है ना? बैलेंस बिल्कुल भी. अब देखो, compare this table with now this table. This was shown to you. This one. Does this look more like normal distribution? Yes. है ना? अच्छा, फिर भी we can't say कि we are 100% sure. So we will always apply the mathematical formula to find that out 100%. So now what do? First step will be, even before applying the Spearman's rank correlation, the first step will be to plot a scatter graph. Since we are short of time, the graph has already been plotted. Achha, one important thing, and you can note this down, that whenever we plot a scatter graph to find out whether the relationship between two variables is linear, it's non-linear, it's positive linear, or negative linear, in that case, it doesn't matter where you want to plot which variable. यानी कि x axis पे आपको अगर for example यहाँ पे आपको है number of individuals of species S and number of individuals of species R. So for such kind of graphs, it doesn't matter which axis you are using for any of the variable. समझ आ रही है बात? क्योंकि हम जब अपने normal graph बनाते हैं, जैसे हम P3 में बनाते थे, तो in that case it was very important to always plot the dependent variable on the y-axis and the independent variable on the x-axis. ये बात पता है मरियम? Yes, miss. The independent variable is always plotted on the x-axis and dependent variable is always plotted on the y-axis. यहाँ पे when you are plotting a scatter graph, you will not worry about that because it doesn't matter, right? अच्छा, अब now a scatter graph has been plotted by taking data from the table which we saw on the previous page, and this is how this scatter graph looks like. Now, what would be your comment? Does it look like these two individuals, these two variables have a linear relationship between each other? हाँ, लग तो रहा है best fit की line बन सकती है बीच में. बन सकती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती. तो again, there is a big query. We are not sure, right? So in such a case, if two conditions, दोबारा से मैं revise कर रही हूँ. The data shows looks like it might not be normally distributed. Condition number 1. Condition number 2, the scatter graph is not giving you a clear-cut indication about the fact that there is a linear relationship between two variables. In that case, you will try to confirm this by applying the Spearman's rank correlation formula. Let's see how we do that. अच्छा, अब हम rank करते हैं अपना data. तो rank कैसे करेंगे? Okay, if you remember, let me in fact, do like this. Let me take out.
I'm just copy pasting it over here so that I don't have any problem in. Okay. This was the data. ठीक है? I'm using my cursor. I hope you can see that tiny table on the top. नजर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है? ये data है हमारे पास. This is the data. I'm zooming in and now I'm zooming out. So what are we doing? हमारे पास था number of species R and number of species S and the total number of quadrats that we have used. ये हमने कोई random या systematic जो भी हमने sampling की है वो की है. 10 quadrats हमने use किए हैं. And in each quadrat we are calculating the number of species R. तो quadrant number 1 में हमें 38 मिले, quadrant number 2 में हमें 2 मिले, and so on. ठीक है? अच्छा, and now what did we do? We had 2 columns, and now we are ranking this data. This is the first step for for Spearman's rank coding. हम rank कर रहे हैं कैसे? थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लेके चलती हूँ. We are ranking this data कैसे? कि for example, for the number of species R, quadrat 4 has the largest number, so it is ranked as number 1. ये देखो, कुछ समझ आ रहा है कैसे ranking की है? एक दफा रिपीट कर दे. हाँ, रिपीट इस तरह कर रही हूँ कि जैसे ये कॉलम थे ना, इस वाली टेबल में, in this table, which you can barely see, 2 columns now have been taken from this table and put into this table, and we are ranking this data. तो ये हो गया number of species R, and this is number of species S. ठीक है? अच्छा, if I look at the numbers of the species R in each quadrat, I can see quadrat number 4 has the largest number, 50 है ना? तो we say कि ये जो quadrat है, since इसके पास सबसे largest number of species R है, तो हमने इसको rank number 1 दिया. Rank number 1 मतलब हमने इसको हम कहते हैं ना फर्स्ट आया है ये. ठीक है? तो क्योंकि ये फर्स्ट आया है, रैंक इसका सबसे टॉप पे, तो हम इसको सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देते हैं रैंकिंग की, एंड दैट इज 10. ठीक है? अच्छा, नाउ फ्रॉम दिस टेबल व्हिच नंबर विल कम आफ्टर 15? 50 से क्लोज सबसे कौन सा नंबर है इसी टेबल में से, बताओ? 43. 43. तो हमने उसको दिया रैंक नंबर 2. तो रैंक नंबर 2 मींस रैंक तो हमने उसको 2 दिया, लेकिन स्कोर हमने उसको 9 दिया. Are you getting it? Yes, मैं सब समझ आ गया. समझ आ गया ना? इस तो we did ranking for this and we did ranking for this. Rank कर लिया. This is our step number 1. ठीक? Okay, we've ranked the data. Now we calculate the differences in the ranks. Let's see how we calculate the differences. Just look. This was our original table. We utilized this table to put it over here, and we found out the rank for species R and the rank for species S. We did this. अब हम इस टेबल में से क्या कर रहे हैं? ये वाले रैंक और ये वाला रैंक यहाँ से ले लेंगे, and we move on to the next page. And what do? We find out the differences in the rank. So this is rank for species R and this is rank for species S. And now I find out the differences in the rank. 7 minus 6 is equal to 1. 1 minus 2 is equal to minus 1. 5 minus 4 is equal to 1, and so on. इतनी बात समझ आ गई differences in the rank? हाँ मिस, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सा किससे माइनस करना है? एस से आर करना है या आर से एस करना है? एक second. Once you have ranked both sets of results, you need to calculate the differences in the rank D by subtracting the rank of species S from the rank of species R. Then square each of these values. I think the way the table has been given to you, you will decide accordingly. For example, let me just zoom into this table. इस table में आपको ऐसे दिया हुआ था ना, R and S दिया हुआ था. So I think you will also do it in the same manner. ये table तो आपको पहले से दी हुई थी ना? समझ आ रही है बात? Yes, miss. हाँ, ऐसे ही करना होगा, because exams में मैंने ऐसे ही देखा है कि it is done like that. अच्छा, we find out the differences in the rank, and then since we have so many negative numbers,
इतने सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, so in order to get rid of these negative signs we are squaring these numbers and we square all them, right? So square means कि ये d square आ गया हमारे पास, and then we find out sigma d square which is the sum of all these squared numbers. तो sigma d square क्या होगा, 1 1 1 1, ये सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12. इतनी बात समझ आ गई? Yes. अच्छा, let's go back. What was the first thing that we did? We plotted a graph, a scatter graph. That gave us an indication that there might not be a linear relationship. So we are now not going to use the Pearson's linear correlation coefficient क्योंकि उसका तो नाम ही Pearson's linear correlation coefficient था. Now we'll be using the Spearman's rank correlation coefficient. Rank, इसका नाम rank है इसलिए कि हम rank करते हैं data. First step, plot the scatter graph. Second step, you rank your data. Third step, you find out the differences in the rank. Fourth step, you calculate the sum of all the differences. Fifth step, you put all these value onto this formula. The formula for calculating Spearman's rank correlation coefficient is, अब अगर आपको याद हो, जो Pearson's था ना, उसका symbol सिर्फ R था, only R. But the Spearman symbol is RS. ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है. Although I am not telling you to remember these formulae, but at least you should know that R stands for Pearson's linear correlation coefficient and RS stands for Spearman's rank correlation coefficient. So RS is equal to 1 minus bracket open, इसको modulus भी कहते हैं, 6 into sigma d square divided by n cube minus n, where RS is equal to Spearman's rank correlation coefficient. Sigma d square तो हमने अभी निकाला, ये वाला, ठीक है? And n is a number of samples. What was n? N is a number of samples. हमने कितने samples लिए हैं? N is 10. We are taking the samples in 10 different quadrants. ठीक है? अब हम ये डेटा देखते हैं कि हम इस डेटा को यूज करके कैसे हमने RS निकाला है. तो this is what we did. सॉरी मैं इसका फॉर्मूला देखती हूँ क्या है. 6 into sigma d square. तो sigma d square क्या है हमारा? Sum square का sum था ranks का, difference in ranks का. हाँ हाँ, तो वैल्यू क्या है sigma d square? 12. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? We will be doing 6 multiplied by 12 divided by n cube minus n. तो n cube minus n ये होगा. n number of quadrats है. n जो है ना वो number of quadrats है, तो हमारे quadrats है 10. तो n cube minus n का मतलब 10 cube 10 raised to the power 3 minus 10. ये बात समझ आ रही है? Yes. सही है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि 1 minus 6 into sigma d square n cube minus n. तो हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, सब कैलकुलेशन कर ली, ये सारा हमने वर्क कर लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन फाइनली वी सबट्रैक्ट जो भी इसके बाद जो वर्किंग आ रही है, तो हमारे पास 72 आ रहा है. सो वी राइट डाउन 1 minus 72 और 10 cube minus 10 का मतलब 1000 minus 10. तो ये सब कुछ करके the value for RS that we are getting is 0.93. We always rounded off to 2 decimal places. हमारा आंसर आया था 0.928 और हम इसको 2 decimal places यानी कि 0.93 कैलकुलेट कर रहे हैं. अच्छा, so the Spearman's rank correlation coefficient that we have calculated is 0.93 and we say that this is our answer. Let's figure out हम इस आंसर को justify कैसे करेंगे. The closer the value is to 1, the more likely it is that there is a genuine correlation between two sets of data. So Mariam, do you think that this number is very close to 1? Yes. It is close to 1. So this means there is a genuine correlation. ठीक है? हालांकि when we had plotted the scatter graph, which was this one, we were not sure कि आपने कहा था ना हम इस points कुछ close हैं भी कुछ नहीं भी हैं, तो we are not sure. Now we understand the importance of using a proper mathematical construct to confirm on the fact that whether there is a correlation or not. फिर जब हमने calculate किया RS तो उससे हमें पता चला कि there is a relationship. और since हमारा number एक positive number आया है ना, इसमें कोई negative sign तो नहीं है, तो उसका मतलब there is a positive linear relationship between
species R and species S. Our value is very close to 1, so it certainly looks as though there is a strong correlation. However, as with the t-test and the chi-square test, we need to look up this value in a table and compare it against a critical value of 0.05. ये तो पता है ना, ये पिछली दफा किया था. Yes, miss. As in most statistical tests used in biology, we use a probability of 0.05 as our baseline or cutoff. If our value indicates a probability of 0.05 or less, we say that there is a significant correlation between our two samples. ठीक है, कैसे मैंने बताया था, हम इसको कंपेयर करते हैं. 0.93 हमारा आंसर है और हम इसको टेबल में देखते हैं. अच्छा, अब what was n? n क्या था हमारा? 10 था. Yes. n 10 था ना इस क्वेश्चन में, ठीक है. अच्छा, our calculated value was 0.93. The tabulated value is 0.65. So you ask a question to yourself, is the calculated value more than the tabulated value? Yes. So this means there is a significant relationship between the species S and species R. देखो इसमें क्या लिखा है? For our data, we have 10 quadrats. So for this question, n is equal to 10. The critical value is therefore 0.65, जो कि हमें टेबल में नजर आ रही है. The value which we calculated was 0.93, which is much higher than the tabulated value. So this gives us a conclusion that there is a significant correlation between the numbers of species R and the numbers of species S. ये बात clearly समझ में आ रही है मरियम? जी मिस. ठीक है. अच्छा, एक और नई चीज है जो मैं इसमें करवाऊंगी, and that is the null hypothesis. Null hypothesis जो होता है ना, it is the मैं थोड़ा सा इसको briefly बता रही हूँ ताकि जो recording भी सुन रहा होगा वो समझ जाएगा. Null hypothesis is the usual hypothesis which is made before doing any scientific research. Usually, whenever a scientist is applying a scientific method and he wants to investigate or research on any experiment, he makes a null hypothesis. Null का मतलब होता है, हम कहते हैं null and void. Literally, null means zero. ठीक है? Null actually means zero, and null hypothesis means the hypothesis of no change. The hypothesis of no change. इसका क्या मतलब है? For example, कि इसी एग्जाम्पल को ले लो कि एक गार्डन है, ठीक है. There's a small garden in which I'm growing species P, जिसको मैंने ब्लू से किया है, and I'm growing species Q. ठीक है. सपोज कि Q जो है वो कोई फ्लावर्स हैं और P जो है वो कोई और चीज है, कोई डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं. ठीक है. I want to find out, एक्सपेरिमेंट मुझे करना है कि क्या इन दोनों स्पीशीज में आपस में कोई रिलेशनशिप है, कोई कोरिलेशन है, राइट? Even before doing my experiment, I will have to make a null hypothesis, which means कि अब मैं null में no change जाहिर करूंगी. मैं कैसे बनाऊंगी hypothesis? I will say there is no significant. I am making a null hypothesis. There is no, and the keyword is no. There is no significant relationship between individuals of species P and species Q. ये मैंने बना दिया null. अच्छा, scientists, why do they make null hypothesis? Because this hypothesis gives a challenge. It's very challenging. अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर आप किसी चीज में believe कर रही हो, मरियम आपसे कहूँ कि नहीं, I don't believe in this thing. Does it challenge you? Yes, miss. चैलेंज करते फिर आप फौरन से बोलने लगते नहीं 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 ऐसा नहीं है और ऐसा है, and then you try to prove your stance by providing evidence, right? So what do scientists usually do when they are researching on any topic? They always usually make a null hypothesis and then they try to prove or disprove it.
तो इसमें मैंने ये नल हाइपोथेसिस बनाया। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल, मैंने आपको अभी स्पीयरमैन ग्लैंड का क्वेश्चन ही नहीं दिया, मैंने आपको कहा कि in a garden there are species Q which is growing and there is species P which is growing, and make a null hypothesis for this. तो आप क्या null hypothesis बनाओगे? आप कहोगे there is no significant relationship between the individuals of species P and the individuals of species Q, और फिर आप उसको प्रूव करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं पीछे स्लाइड पे। इसमें क्या लिखा है कि ये देखो मिस जी बेटा। मिस ऐसे देखकर हम कैसे बोल सकते हैं कि नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है? देखकर नहीं बोल रहे हम, देखकर नहीं बोल रहे, मैं आपको कह रही हूँ कि आप नल हाइपोथेसिस बनाओ। समझ आ रही है? एग्जामिनर आपको कहेगा कि नल हाइपोथेसिस बनाओ, एग्जामिनर ये नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर जो है ना, वो ऐसी एक क्वेश्चन बनाएगा, कोई सा भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएगा, और वो आपको लेट्स से कि ये टेबल दिखा रहा है, राइट? ही इज सेइंग दिस इज अ डेटा, ठीक है, एंड दिस डेटा शोज यू 10 quadrats, and in each of the quadrats is showing you number of species R and number of species S. Let's say as a scientist you have to find out the degree of correlation between these two species, but before finding that out he tells you make a null hypothesis for this. वो आपको कहता है बनाने के लिए। तो अगर मुझे, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि इसके लिए नल हाइपोथेसिस बनाओ, व्हाट विल आई डू? मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊंगी, एंड द एक्यूरेसी ऑफ दैट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से there is no, and the word no is very very significant. I will say there is no significant relationship, or there is no significant correlation between the individuals of species R growing in a garden and the individuals of species S. अब मैंने बना लिया null hypothesis, अब आपसे कहा जाएगा आप इसको प्रूव और डिस्प्रूव करो। समझ आ रही है बात? यस यस, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे चलते हैं। जो ये पार्ट था जो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था रीडिंग में, कि when I was doing this calculation and when we reached to 0.93, तो हमने ये कहा कि हाँ लग रहा है भाई कि this number is very close to 1, और since ये number किसी negative sign के साथ नहीं है, तो most probably there is a positive linear correlation between species R and species S. लेकिन अभी भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं chi square अप्लाई करके या ttest अप्लाई करके, लेकिन उसके साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और आपसे एग्जामिनर ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस, यानी आपने जो रिजल्ट निकाला है ना अभी अभी, इसका दूसरा तरीका कहने का ये है कि द नल हाइपोथेसिस that there is no correlation between the two samples is not supported. समझ आ रही है बात? लेट्स से अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे फ्रेज किया होता कि आपको क्वेश्चन के शुरू में ही कहता, इवन बिफोर डूइंग द कैलकुलेशन का एक केस का एक नल हाइपोथेसिस बनाओ, और फिर एंड में वो आपसे पूछता अब बताओ आपकी क्या कंक्लूजन है, तो आप एग्जामिनर से कहोगे कि the null hypothesis that was made in the beginning of the experiment has been completely disproved. It is completely not supported. Why? Because this is the answer that I have got. My RS shows me that it is 0.93, which is a number which does not have a negative sign. It's very close to 1. So my null hypothesis is rejected. Does it make sense? Yes, miss. यस हाँ, दुआ आप बताओ। यस में समझ आ रहा है। समझ आ गया? अच्छा, एक सेकंड में देखूं इसमें क्या है। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी जो कि अक्सर ये एग्जाम में आता है कि whenever you see, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स उनको दिए गए हैं एंड दोस वेरिएबल्स दे शो दैट देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन दीस टू, a correlation does not show or is not indicative of the fact that there is a cause and effect relationship. समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि I'll just give you an example कि जब भी जो है वो स्कूल में बेल बजती है, ठीक है, नहीं कोई और ऐसी कोई दो फैक्टर्स हो जो कि एक साथ हो रहे हो, राइट, और वो एक कोइंसिडेंस हो दोनों फैक्टर्स में कि जब भी ये चीज होती है तो ये चीज भी हो जाती है, कोई चेंज, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैं कहूँ कि जब भी बेल बजती है स्कूल में तो उस वक्त जो है ना वो मुझे एक कव्वे की आवाज आती है, ठीक है, सही, और ये हमेशा ऐसे होता है, या एक कोई भी चीज जो हो रही हो ना सराउंडिंग में। अब
There is a correlation between these two variables, but it doesn't mean that there is a cause and effect relationship between the two variables. Are you getting my point? Miss sort of जी like देखो अगर ऐसे है जैसे relationship कहते हैं है ना, तो हाँ हाँ देखो ऐसे it's a रिलेशनशिप cause का and मतलब effect. ये, एक सेकंड सर मैं इसको रिफ्रेज करती हूँ. ये एक बहुत ही मशहूर जुमला है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट दे से कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉजेशन. कभी सुना है ये? कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉजेशन. फॉर एग्जांपल के अगर मैं कहूँ कि जितने भी हमारे सोसाइटी में केसेस होते हैं या कोई क्राइम्स होते हैं वो इस एज ग्रुप के जो है ना लोग करते हैं, ठीक है. तो दिस इज जस्ट अ कोरिलेशन, बट इट डजंट मीन दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू एक्चुअली ओवर हियर इज दैट you can get a positive correlation between two variables. For example, देखो हम गार्डन की मिसाल लेते हैं. For example, there are two factors. एक है pH of the soil और एक है rate of the growth of the plant, यानी कि average height of the plants, ठीक है. Now, when I take these two sets of data, or I come up to the conclusion that if the garden pH is below 6, the average height of the plants is always high. तो इसका मतलब ये है कि ये दो फैक्टर्स एक दूसरे से कोइंसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पीएच की वजह से जो है ना वो हाइट ऑफ द प्लांट्स बढ़ रही है. हो सकता है कोई और फैक्टर हो, सनलाइट ज्यादा उनको मिल रही हो, या जो है वो मिनरल सॉल्ट्स का कंटेंट ज्यादा हो सॉइल में, या कोई या पानी ज्यादा मिल रहा हो एडिक्वेट, तो वो रीजन हो सकती है. अब समझ आई बात? Yes, मैं सब समझ आ गई. Thank you. अब समझ आ गया मुझे, मैंने गलत एग्जांपल दिया ना शुरू में. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज दे आर सेइंग रिमेंबर दैट शोइंग दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट अ कॉजल रिलेशनशिप और अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इन अदर वर्ड्स वी कांट से दैट द नंबर्स ऑफ स्पीशीज आर have an effect on the number of species S. अब ये नहीं लिखोगे कभी भी एग्जाम में, आप सिर्फ ये लिखोगे that there is a positive linear correlation between the numbers of species S and the number of species R. It doesn't mean that the number of species S has a cause and effect relationship on the numbers of species R, or vice versa. There could well be other variables that are causing both of the numbers to vary, है ना. कोई third factor होगा जिसकी वजह से ये दोनों जो है ना वो numbers vary हो गए. समझ आई? दो आपको समझ आ गई? Yes, miss. ठीक है. अच्छा, ये तो हमने कर लिया अब. एंड वी आर डन विद रैंडम एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. थोड़ा सा मैं आपको वो भी करा लेती हूँ, इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इंट्रोडक्शन करा लूंगी और बाकी पार्ट आई विल बी आस्किंग यू टू फिनिश द क्लास, यू नो, टू डू दैट, ताकि थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता चले. ये सबसे जो इजीएस्ट पार्ट है ना of the chapter biodiversity is this one, which is the classification of organisms. ठीक है जी. इनफैक्ट हम थोड़ा सा स्पीशीज के बारे में कर लेते हैं. The definition of the word species is extremely important as far as your exams is concerned. ठीक है. और थोड़ा सा you know this new book has some changes as well, so I'd like to discuss this. The term species is often used to mean a group of organisms that appear similar to each other and they can breed together successfully to produce fertile offspring. This definition describes the biological concept, also known as the biospecies concept. ठीक है. When many species are described for the first time, it is impossible to apply this definition because most are described using physical features such as morphology, meaning outward appearance, and anatomy. In these circumstances, biologists are using morphological species concept. Biologists also use the ecological species concept when they find a population of organisms that share the same features and they live in the same habitat at the same time. ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? दोहा आप बताओ. दोहा, can you hear me? इसमें species, yes, miss. इसमें species के बारे में बताया हुआ है that
एक ऐसे ग्रुप को जो अपेयरेंस में भी सेम हो, सेम जगह रहे, एक तरह से ब्रीड करे, उसको स्पीशी कहते हैं. एंड देन दे हैव एक्सप्लेन के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी की टर्म्स में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है. हाँ, मतलब यानी कि एक तो there's a general definition which is the biological species. So of course you all need to know the general definition, right? Within that general definition, then there might be some subcategories in which organisms that have the same structural features, gross anatomy will be considered to be morphologically similar, है ना? And organisms which have the same ecological background, meaning with the way they are interacting in an environment, the kind of the habitat they are living in, तो हम कहेंगे ये उसकी ecological species है. But basically all these they sort of boil down to this definition, which is that of the biological species, and that's the definition. This is the definition that you will be writing in your exams if you're asked, right? और इसमें keywords भी दिए हुए हैं, तो you can go through these definitions. I'm not going to go into the detail of all of that. There were some definitions which you were taught in O levels, and one of those definitions was population. If you see a same kind of organisms living in a certain habitat, so we use the word population for that. Organisms of the same species living in the same place and at the same time, which can interbreed with one another, is known as a population. Like, I'll give you an example. I would say a population of fleas. Fleas नहीं होती जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं. A population of fleas living in the cat's fur. Fleas living in the cat's fur. जो लोग cat पालते हैं उनको पता होता है, right? A population of elephants living in savannas or grasslands. So population की definition you should be very, very clear. These are the small 1 to 2 marks definition which are asked in exams as far as this chapter is concerned. So these definitions and as well as the definition of population should be very, very clear to you. ठीक है? अच्छा, now since this whole world is full of different kinds of living organisms, including humans, animals may, of course, animals के अंदर भी ना various varieties of animals, plants में various varieties of plants. So there has to be a scientific way of classifying different kinds of life forms on Earth. Why do you think it is necessary? तो हमें क्यों जरूरत है कि हम सारे living organisms को किसी तरह से classify करें? What benefit will we get from classifying them? रिकग्नाइज करना इजी हो जाएगा बिकॉज हर एक स्पीशी की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. Bilkul. Recognition is easy, and then there are several species. For example, there are several plants that belong to one species have a certain characteristic. There are some plants which grow by asexual reproduction. There are some plants which grow by sexual reproduction. There are some plants which are poisonous. There are some plants which are edible. There are some plants which are medicinal, right? So we need to categorize them, classify them so that we can study about them. Otherwise, our study will be very, very haphazard. So we need to biologically classify organisms, and this biological classification is actually defined as the organization of living and extinct organisms into systematic groups based on similarities and differences between species. ठीक है? We want to classify them. Living को भी include करेंगे, extinct को भी group करेंगे, and we will be making systematic groups. और उस groups बनाने का कोई वो होगा, benchmark होगा, based on similarities and differences in between species. अच्छा, जब हम groups बनाते हैं तो we always make a hierarchy, ठीक है? And that hierarchical classification जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ. This is the hierarchy. For example, we start with the highest level in the hierarchy, which is the domain. Then we move on to kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Acha, in your AS and in A2 also, you all know कुछ चीजें तो हम बार-बार use कर रहे होते हैं कुछ नाम. For example, I use the word E. coli. ये सबने सुना है ना? Then we use the word Vibrio cholerae. ये भी कोई नया नाम नहीं है. Then we've taught you Mycobacterium tuberculosis. ठीक है? So when we were using these two words, we always used to tell you कि जब आप when you write down the first letter, you always use a capital word and you write the second one with the small word. And this is how you're supposed to scientifically write the scientific name of this pathogen.
Why did we say like that? Because one of the name, यानी कि अगर हम E. coli करें ना, अगर आपको E. coli का पूरा नाम चाहिए तो इसका नाम ये, it is known as Escherichia coli, right? Escherichia coli. So the Escherichia name is for the genus and coli is the species. ठीक है? तो ये ऐसे ही हमने नाम नहीं रखे. We have named different kinds of organisms on the basis of certain characteristics, similarities which they have with the members of the group of their species. और हमने उसके हिसाब से एक हायरार्की बनाई है. जैसे कि एग्जांपल देने के लिए आपको उन्होंने एलिफेंट की एग्जांपल दी है कि अगर हम सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की में जाएं तो वी नो दैट इज एलिफेंट अ यूकैरियोट, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, तो हाँ, तो ये इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वाली, यानी स्मॉलेस्ट एज इन कि सबसे टॉप मोस्ट इसकी वो होगी हायरार्की. देन अगर हम उस हायरार्की से आगे बढ़ेंगे तो वी नो कि द एलिफेंट इज एन एनिमल. सो दिस मींस दैट हमें हर लेवल पे जैसे जैसे हम इसको और स्पेसिफिक से स्पेसिफिक उस पे आ रहे हैं तो हमें कोई क्राइटेरिया देना होगा ना. फॉर एग्जांपल वी विल से कि ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारी हायरार्की का, इसका एक नाम है एंड द नेम इज डोमेन. So the elephant belongs to the domain Eukarya, which means the elephant is a eukaryote. ठीक है? Then from domain we move on to the second hierarchical rank, and that rank is that elephant is an animal. Of course, it's not a human and it's not a plant. From the hierarchy kingdom, we move on to another hierarchy, which is phylum. And phylum में हम उसे कहते हैं कि the elephant is an organism which belongs to phylum Chordata. Chordata का मतलब है all those which have a backbone. Elephant के पास backbone है, vertebral column है. Yes. बिल्कुल. Yes. तो हाँ, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हायरार्की में स्पेसिफिक से स्पेसिफिक होते जा रहे हैं कि the elephant belongs to domain Eukarya. It belongs to kingdom Animalia. It belongs to phylum Chordata. And then it belongs to class Mammalia because it's a mammal. It gives birth to young ones. It feeds the young ones by means of the milk. It belongs to order Proboscidea. I don't know कि इसकी क्या वो है. There must be some reason. Family उसकी Elephantidae है. Now we're becoming more and more specific. Genus उसका ये है, species उसका ये है. ये species इसलिए कि ये हम African bush elephant की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी species है जो अफ्रीका में different kinds of elephants होंगे. कोई अफ्रीका में होंगे, कोई दूसरे जंगल में होंगे. तो अफ्रीका में जो जंगल में जो elephants पाए जाते हैं वो they belong to this species. ठीक है? This is how we classify them. And this makes the life of the people who especially are doing ecological research and surveys easy. They in fact, most of the different organisms, living organisms, whether they are plants or whether they are tiny fungus or anything, have been classified in this manner so that studies can be carried out very easily. Look at the example of this plant. Hibiscus plant hai. So are plants eukaryotes? Yes. Yes. ठीक है. Domain Eukarya, kingdom Plantae because it's not an animal, phylum Angiospermae. Angiospermae means flowering plants. So hibiscus is a flowering plant. Hibiscus flower हम सब ने देखा है, वो reddish pink color का जो इसका flower होता है. अच्छा, अब इसकी क्लास क्या है कि हो सकता है कि क्लास वो बताती हूँ हमें कि whether it's a dicot or a monocot. So hibiscus is a dicot. और फिर आगे आगे आके उसकी सब क्लासिफिकेशन होती है. So now अब सवाल आता है, what do you need to remember for exams? Nobody is going to ask you to remember the name of animals or plants and to remember के उसकी ये सारे क्या होंगे hierarchies. But the examiner is expecting you to know the names of these taxonomic ranks and the names in order. यानी domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये जो नाम है ना, ये आपको ऑर्डर में पता होने चाहिए. ठीक है? एंड देयर इज अ न्यूमोनिक टू रिमेंबर दिस. अगर हम डी को सिर्फ हटा दें तो हम इस तरह करते हैं, किंग फिलिप केम आउट फ्रॉम जर्मनी स्विमिंग. समझ आई मैंने कैसे बनाया? किंग, हाँ, मैं समझ आ गया. हाँ, केम आउट फ्रॉम जर्मनी स्विमिंग. इससे कभी नहीं भूलोगे आप इसकी जो है ना सीक्वेंस. बट दिस इज हाउ we classify different kinds of organisms on the basis of such hierarchical ranks. Achha. What is expected from you? Number one, the sequence and the names of these hierarchical ranks in the correct order is expected from you. Number two, you need to know
the definition of taxonomy. Taxonomy is a sub-branch of biology which deals with the study and the practice of naming and classifying species and groups of species within the hierarchical classification scheme. और इसकी भी definition पता होनी चाहिए कि what do you mean by a hierarchical classification? ये मैं नहीं पढ़ रही, आप लोग खुद से पढ़ लेना. It's just simple, memorization. हाँ, taxonomy की definition भी पता होनी चाहिए and taxonomical rank, या फिर हम इसको कहते हैं taxon. taxon की definition भी पता होनी चाहिए कि a rank and a taxon दोनों चीजें. सबसे पहले हम देखेंगे what's a taxonomical rank. One of the groups used in the hierarchical classification system for the organisms, यानी कोई सा भी group, species हो गया, genus हो गया, family, order, class, उसको हम कहते हैं taxonomical rank. ठीक है? Taxon क्या है? A taxonomical group of any rank such as a particular species, example giraffe, a family, example elephantidae, a class or a kingdom is known as a taxon. ठीक है? यानी उस खाली चीज को taxon बोलेंगे और rank उस rank को बोलेंगे. मेरे ख्याल से do you see a difference between these two? बस वो ग्रुप है और ऊपर क्लासिफिकेशन है. हाँ. और taxon? For example, group of the rank. हाँ, group of the rank. For example, इस उसमें how would you describe a taxon? जैसे हम बोलेंगे यूकैरिया वगैरह टैक्सन है और फिर उसका रैंक वो डोमेन है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है? So again I repeat that taxonomical rank and taxon needs to be differentiated. A taxon is a taxonomic group of any rank such as a particular species like giraffe, family, जो भी उसकी है, elephantidae या mammalia, उसकी क्लास मेमेलिया हो गई, या फिर किंगडम जो है वो उसका प्लांटी हो गया. सही है? डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक. लेट्स गो बैक. The highest rank in this hierarchical system of classification of living organism is the domain. That's the highest rank. ठीक है? And kingdom is the taxonomical rank just below the domain. So if we just look at this table once again, we would say the highest rank is domain and kingdom is the second highest rank. और उसके बाद सारे ranks हैं. You will not be asked to memorize all these, ठीक है? But you will be asked to know the names of these in their hierarchical sequence. ठीक है? दुआ समझ आ रही है बात या confusion हो रही है? Yes, miss, आ रही है. आ रही है. अच्छा, थोड़ा सा domains कर लेते हैं and then I'll end my class. बाकी हम फिर Monday के दिन करेंगे. Let's look at, अभी हम पीछे ये कर रहे थे ना कि सबसे highest rank जो है वो domain है. ठीक है? Let's look and try to understand what do you mean by domain. Basically, अब तक पूरी दुनिया में on this earth, all the life on this earth has been divided into 3 domains. ठीक है? अच्छा, कैसे? अब हम करते हैं. In chapter 1, you saw that prokaryotes and eukaryotes have significantly different cellular structures. आप सबको pro and eukaryotes के differences आते हैं? Clear है इस पे? Yes, miss. yes बस. टेबल भी हमने, हाँ, टेबल भी की थी, रिवीजन भी किया था एग्जाम से पहले. In the 1970s, prokaryotes were discovered. कोई नए prokaryotes discover हुए थे, and you know the name of that prokaryote. एक है ये जो hot spring में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जिसमें से हमने टैग पॉलीमरेज निकाला था PCR के लिए. ठीक है? So those are some special prokaryotes जिसको मैंने आपको नाम भी बताया था. The name is thermophils because they love extremes of temperature, and these are special bacteria that can grow in extremely hot environments, right? So in the 1970s, prokaryotes were discovered living in extreme environments such as hot springs where temperatures often exceed 100 degrees Celsius. These organisms are called extremophils and they are not like typical bacteria. हैं तो ये बैक्टीरिया ही, लेकिन इनके कुछ फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हैं. What is the difference? Studies revealed that the genes coding for the RNA that makes up their ribosomes were more like those of eukaryotes. ठीक है?
Give me an answer, Mariam. Do bacteria or do prokaryotes generally, हमने जो AS में किया था, do they have ribosomes? Yes, miss. They have ribosomes. लेकिन ये जो खास बैक्टीरिया है ना, जो थर्मोफिल्स हैं, their ribosomes, इनके जो genes हैं ना, coding for the RNA, they are a bit similar to eukaryotes rather than being similar to prokaryotes. The extremophils were found to share features both with the typical prokaryotes and with some of the eukaryotes. So, at this time, the studies of molecular biology assumed a much greater significance in taxonomy. This meant that now we have to make a new taxon, which is the domain, had to be introduced to reflect the differences between these extremophils and typical bacteria. The domain is the taxon at the top of the hierarchy, sabse upar, right? And then the prokaryotes are divided between the domains bacteria and archaea, and all the eukaryotes are placed into the domain eukarya. ठीक? सबसे टॉप हायरार्की पे का जो टैक्सन है वो क्या है? आपका ये है डोमेन, ठीक है? फिर prokaryotes are divided between the domains bacteria and archaea, and all the eukaryotes are placed into the domain eukarya. ठीक है? ये समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? Yes, miss. दो आप बताओ. मुझे जो लास्ट में लिखा है ना हायरार्की वगैरह वाली चीजें समझ नहीं आई. ये ऐसे है कि देखो, पीछे जाते हैं. डोमेन वाज एट द टॉप, ठीक है? एंड ये तो इतनी समझ आ रही है कि डोमेन सबसे टॉप पे है, ठीक है? जी जी. और डोमेन में प्रीवियसली देयर वाज ओनली यू एंड प्रोकैरियोट्स, क्योंकि एक्सट्रीमोफिल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, राइट? So now they are saying that the domain is at the top of the hierarchy. The prokaryotes are divided between the domains bacteria and archaea, and the eukaryotes are placed into the domain eukarya. Living organisms हो गया, life हो गई, right? Living organisms, all living organisms, right? And domain, for example, अगर मैं domain बना रही हूँ तो then I'll be making 3 domains now. One is domain archaea, one is domain bacteria, जिसको typical bacteria कहते हैं, prokaryote, and then we have this domain. अब समझ आ गई बात? Yes. ठीक है? अच्छा. Many archaea, they live in extreme environments. They can live in hot geysers, deep volcanoes, hot springs. Sometimes तो वो न सिर्फ ये कि high temperature में रहते हैं, but sometimes they can live in extreme environments like a very high concentration of salt. हालांकि अगर salt की concentration बहुत ज़्यादा हो तो organisms can die because of osmotic changes, but they can live. Sometimes they can, produce gases like methane. They cannot survive when there is oxygen. नहीं, उल्टा है कि oxygen की presence में वो survive नहीं करते. तो मतलब इसको हम इसलिए कहते हैं extremophils. ठीक है? तो अब now I'm just concluding my lesson, my lecture for today कि bacteria is that domain that contains all the prokaryotic organisms except those classified as archaea. तो हम archaea को bacteria में नहीं डालेंगे. This is the bottom line for the discussion today. Archaea is that domain of the prokaryotic organisms that resembles bacteria, but they share some of the features with the eukaryotes. And eukarya is बिल्कुल अलग से एक domain है जिसमें क्या कौन-कौन आता है? We come in eukaryotes, humans, all the plants, the fungi, the protoctis जो हमने वो किया था ना, plasmodium, animals, सब कुछ आता है इसके अंदर. Is that understood? Yes. ठीक है? अब कोई question नहीं है तो I'm just ending my class. सही है, recording तो हो गई है, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, miss. Thank you. Allah Hafiz, miss. You're welcome.